सबसे पहली अगर कोई प्राथमिकता है तो देश के नौजवानों के लिए रोजगार उपलब्ध कराना, रोजगार के योग्य नौजवानों को तैयार करना, रोजगार के योग्य नौजवान को तैयार करने के लिए पूरा एक मैकेनिज्म, एक व्यवस्था, एक स्ट्रक्चर तैयार करना। इस मिशन के द्वारा उन सभी आवश्यकताओं को पूर्ति करने का प्रयास हो रहा है। दुनिया को जो वर्कफोर्स की जरूरत पड़ने वाली है, हम लिख करके रखे, आने वाले दशकों में विश्व को सबसे ज्यादा वर्कफोर्स अगर कहीं से मिलेगा तो हिंदुस्तान से मिलेगा। This was back in July 2015 when the BJP-led NDA government launched its flagship scheme, the Pradhan Mantri Vikas Yojana, under the Skill India program. PM Modi's promise to skill 40 crore people by 2022 brought hope for the future of the country. In 2016, the cabinet approved 12,000 crore rupees towards skill development. The ministry was then headed by Rajiv Pratap Rudy. But soon enough, this ambitious government scheme ran into hot waters. A report by the Sharada Prasad committee set up in 2016 to examine the functioning of the scheme revealed that an amount of 2,500 crore rupees of public funds was spent to benefit the private sector, without serving the twin purposes of meeting the exact skill needs of the industry and providing employment to youth at decent wages. In the aftermath of these observations and concerns that the scheme wasn't delivering results, Rudy was replaced. A lifeline of 14,870 crore rupees was further injected to revive the initiative under Pradhan. The year 2016-17. The same year, the Finance Ministry had allocated 1,700 crore rupees for the establishment of 1,500 skill centres across the country. But the discourse around jobs and the state of unemployment in India was only getting more intensive. In the aftermath of demonetization, the opposition stepped up its attack against the government. Currently, these businesses, the job creators, are under assault, under attack. Mr. Narendra Modi has attacked them through demonetization and through a GST, which is extremely complicated and allows a significant amount of rent seeking. Income tax departments, other departments are playing an oppressive role. The number one issue will be jobs. Please remember who voted for Narendra Modi in the last election. All those people who became first-time voters. People who had crossed the age of 18. Why? Because largely of Mr. Narendra Modi's promise, I will create. Sometimes he said 1 crore, sometimes he said 2 crore. Maybe he does not know the distinction between 1 crore and 2 crore. He said, I'll create these jobs. People genuinely believe that these jobs will be created. Today, the angst, the anger of young people is jobs are not being created. The government is yet to provide a convincing response. It even rubbished a draft report of the National Sample Survey Office published in the press, which pegged the unemployment rate in India at 6.1% in 2017-18, incidentally a year after demonetization. In 2011-12, this number stood at 2.2% as per the report. Additionally, there is silence over the actual number of jobs generated under the government's flagship Mudra scheme as well.
don't think that's a report. That's a draft which has not been approved. If no job creation takes place, then there is social unrest. This has been a peace period as far as social issues have been concerned, and no major social agitation has been witnessed in the last 5 years. So I completely refute this argument. The government's defiance and refusal to accept the worrying numbers out in the public domain has only raised more questions than answers about its performance in terms of employment generation. We are at Uttam Nagar in New Delhi, and this building right beside me once had a skill development center, which is now shut down. The neighbors around here say that for the past 3 to 4 months, this place is not operational. The place is empty and the owners unreachable. The establishment of skill centers and equipping a significant section of the population for future employment was a flagship initiative aimed at further energizing the Indian economy. But we decided to find out for ourselves as to why there has been discrepancy between what was promised and what the reality is. In July 2015, the Modi government launched the Skill India program. While this announcement brought cheers and tears to the eyes of those unemployed, the situation, the current scenario on ground paints a completely different picture altogether. We are right now in Sirsa in Haryana village of Haryana. And over the course of 20 minutes, we'll tell you the reality on ground. What we found out wasn't an issue that has arisen today. It is actually a deep-rooted problem, a long persisting one that dates back to the time the scheme was just launched. I have with me Mr. Rakesh Kularia, the director of Rosent India Private Limited, a company that is now shut down and who is facing the brunt of Skill India mission under the PMKVY. He has been forced to shut down his company and is now bearing the losses. Hello, Mr. Rakesh Kularia. क्या हुआ ऐसा, क्या सिचुएशन हुई ऐसी जो आपको कंपनी बंद करनी पड़ी? मेरे को डिटेल में बताइए। एक्चुअली में 3 साल पहले हमने प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के कुछ सेंटर ओपन किए, जिसमें एक सेंटर मेरा ये है, 4-5 सेंटर ओपन किए थे मैंने, जो इनकी गाइडलाइन के अकॉर्डिंग इन ग्रेडिंग मैट्रिक्स के लिए इन्होंने एक पोर्टल बनाया हुआ समार्ट, जिसके अंदर अप्लाई करके हमने QC की इंस्पेक्शन होकर 4 स्टार और 5 स्टार में अप्रूव हो गए। एज पर गाइडलाइन हमें पूरे साल का काम मिलना चाहिए था, जिनको NSDC अपने वे में टारगेट बोलती है, लेकिन काम हमें नहीं मिला। जब हम काम मांगने के लिए वहाँ पे जाते थे तब उनकी वर्डिंग ये होती थी, इस साल का काम ख़त्म हो चुका है, जबकि बड़ी बड़ी कंपनियों को लाइक ILFS है, ओरेन है, कुछ इस टाइप की बड़ी कंपनियाँ, डी यूनिक सोसाइटी दिल्ली, इन कंपनियों को वो काम बैक हैंड से देते रहे। तो इस बारे में हमारी काफ़ी प्रोटेस्ट भी हुई, मिनिस्ट्री के आगे भी रूडी जी से मिले, प्रधान जी से मिले, मंत्रालय में जाते थे। पहली बार तो हमें वहाँ पर किसी सीनियर ऑफिसर से मिलने नहीं दिया जाता था, लेकिन 500-600 की तादाद में जब हम वहाँ इकट्ठे होते हैं तो कुछ लोगों को अंदर जाने दिया जाता और उनको एक ये बड़ा आश्वासन देके कि विद इन 1 मंथ या विद इन वीक आपको काम मिल जाएगा, लेकिन किसी को कोई काम नहीं दिया गया, जिस कारण हमारा एक सेंटर पे जैसे 10 से 15 लाख रुपए खर्च आता है मिनिमम, तो
तो किसी के 10 एक सेंटर था, किसी के 2 थे, किसी के 4 थे, वो तंग होके हमने काम न मिलने के कारण बंद करने पड़े। तो अभी तक कितने ऐसे सेंटर्स हैं आपके हिसाब से जिनको अभी तक ऐसे लॉसेस? सितंबर 2017 के अंदर 7,646 सेंटरों को काम मिला था, जिनको काम के दिया गया था प्रोविजनल टारगेट। 7,646 सेंटर में आई थिंक आज के दिन मैक्सिमम 300 या 400 सेंटर रनिंग में हैं, टारगेट रिलोकेशन हुआ है। वो 300-400 सेंटर भी उनके हैं जिनकी या तो वहाँ पर अच्छी सेटिंग है, जिन्होंने प्लेसमेंट कागज़ों में दिखा दी, फेक प्लेसमेंट दिखाई, सारा कुछ स्कैम है प्लेसमेंट का, अभी कोई भी बच्चा प्लेस नहीं हुआ। इस सब का रिकॉर्ड भी हम दे चुके हैं, लेकिन कभी कोई सुनवाई नहीं होती कहीं भी। किसी भी बच्चे की प्लेसमेंट वेरीफाई नहीं होती, सिर्फ वेरिफिकेशन एक मजाक है जिसमें ये देखा जाता है कि इनके कागज़ पूरे हैं, जिससे NSDC आगे रिकॉर्ड शो कर सके भी हमने इतने बच्चों को रोज़गार दे दिया। और सबसे बड़ी चीज़ ये PMKVY का सर्टिफिकेट कहीं भी एलिजिबल नहीं है, गवर्नमेंट जॉब हो या प्राइवेट जॉब हो। आज तक कोई भी ऐसा बच्चा नहीं है जो ये कह सके भी इस सर्टिफिकेट के ऊपर मेरे को गवर्नमेंट में ये जॉब मिल गई। तो इसके लिए इंडिया ने एक्चुअली में स्कैम ही लिया है। तो आपका ये जितना भी सेटअप है इस टाइम पर, पूरा आपने ये रूम भी, अगला रूम भी सेट किया हुआ है, पूरा गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग आपने सेट किया हुआ है, करा आपने PMKVY के अंडर ही था, पर इस टाइम पर ये खाली पड़ा है, तो आपके क्या लॉसेस हैं? आप किस तरह से उस चीज़ को कोप अप कर रहे हो? लॉसेस तो ये है जी, इसमें जब हम एक जॉब रोल के लिए सेंटर ओपन करते हैं तो मिनिमम 10 लाख से 15 लाख रुपये हमारा खर्चा आता है। जिस तरह आप ये देखने लगे तो लैब के अंदर इस जॉब रोल में हमें 30 कंप्यूटर चाहिए, हर एक क्लासरूम में एडजस्ट फैन, AC होना चाहिए, कैमरा होना चाहिए, जिस तरह आगे कैमरा भी लगा हुआ है, इनकी रिकॉर्डिंग भी दिखानी होती है हमने। तो ये सब कुछ होने के बावजूद काम मिलने की गारंटी नहीं है। जिस तरह इस सेंटर को कुछ काम मिल गया, काम मिलने के बाद अभी कोई काम नहीं है, ये खाली पड़े हैं, PC हमने उठा के कुछ पैक कर रखे हैं, भी पड़े पड़े ये ख़राब होंगे। तो अभी हमने यहाँ पे पेड प्रोग्राम चला रखे हैं, भी कुछ हमारी रनिंग में चलते रहें, और जितना कुछ मिले बच्चों से वो ठीक है। बच्चों को हमने कह रखा भी आपने कोचिंग करनी है, कंप्यूटर सीखना है, सिलाई का सामान है, सिलाई सीखनी है, तो आप हमारे पास आओ, 100, 200, 400 रुपये जो महीना के देने चाहो वो दे दो, क्योंकि हमारा खर्चा लगा हुआ है, स्टाफ को हम सैलरी देने लग रहे हैं, तो इसका जितना रिकवर होता है वो ठीक है। जिस तरह इस बिल्डिंग का हमारा 19,000 रुपये रेंट है, तो अभी मंथली 20-22 हज़ार रुपये बच्चों से आ जाते हैं, रेंट निकल जाता है। बाकी रिकवर होना दूर की बात है, जिनका अभी अगर इस सामान को हम सेल भी करते हैं तो ये आधे रेट में भी नहीं जाएगा। The Skill India mission, launched and relaunched to ensure that the youth of the country are employed, is now making those who train these youths bear the brunt. While we reached out to the ministry, the authorities in the ministry, those accountable claim that they are unaware of any such corruption. This isn't the case in just Haryana, however. करीब फंडेड सेंटर पे जिसके अकॉर्डिंग हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी किए थे, वो करीब 10 से 12 सेंटर हमारे क्लोज के कगार पे खड़ा हो चुका है, जहाँ पे अब फंडेड के ड्यू टू नॉन फंडेड फ्रॉम गवर्नमेंट हम लोग जो है सो से अब बंद करने का, काफ़ी तो बंद हो गए, बाकी बंद होने वाले हैं। उसके पीछे रीज़न जो था, जब ये स्कीम हमारा स्टार्ट हुआ था, जिस स्कीम के आधार पे हम लोगों ने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए थे, उस स्कीम की गाइडलाइंस बेसिकली जब हम लोग स्टार्ट किया था तो गवर्नमेंट ने हमें बताया गया था कि ये पूरे 4 इयर्स के स्कीम्स हैं, 2016 टू 2020, जिसमें प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 2.0 इसका नाम दिया गया था। पर 1 साल के बाद क्या हुआ कि इसके जो नॉर्म्स थे, गाइडलाइंस थे, वह बिल्कुल चेंजेज होते चले गए, और जब भी वो गाइडलाइन चेंज हुआ तो वह पूरी प्रोजेक्ट को होल्ड में करके चेंज हुआ। करीब एक सेंटर पे हमारे जो लॉसेस हुए हैं 35 to 40 लाख के लॉसेस हुए हैं, और वो लॉसेस गवर्नमेंट, और करीब हमारे पास जो अभी सेंटर्स बंद होने के कगार पे हैं या बंद हो चुके हैं, करीब मोर देन 2 करोड़ का हमारा नुकसान हुआ है। तो ये जितना भी नुकसान हुआ है गवर्नमेंट की तरफ से? नहीं, गवर्नमेंट की तरफ से इसमें कोई हमें भरपाई नहीं किया गया, और गवर्नमेंट ने इसकी कोई जवाबदेही नहीं ली हमारे से, और हम लोगों ने काफ़ी समय तक इसकी जो कंसर्न अथॉरिटीज़ थे, डिपार्टमेंट थे, हम लोगों ने संपर्क किया, गए, मिले, आश्वासन मिला, पर आश्वासन का कुछ हुआ नहीं, और अंततः हमारा सेंटर क्लोज हो गया। बड़े बड़े प्रोफेशनल्स इंडिया के अंदर में अपनी जॉब छोड़ करके इस स्कीम के साथ जुड़े थे, इस आधार पे जुड़े थे कि एक बहुत बड़ा मिशन था, क्योंकि इसके ब्रांड एम्बेसडर प्राइम मिनिस्टर खुद थे, और आज भी वही खुद ही हैं। तो हमें एक विश्वास था कि उन्होंने एक पहली मीटिंग में कहा था कि आप पढ़ाने की जिम्मेवारी लीजिए, अच्छी क्वालिटी दीजिए बच्चों को, इंफ्रास्ट्रक्चर दीजिए,
ट्रेनर्स दीजिए, हम आपको काम की सिक्योरिटी मैं लेता हूँ कि कंटिन्यू आपके सेंटर्स पे पूरे ईयर काम मिलेंगे। हम लोगों ने उसके आधार पे तैयारियाँ किया, पर इनके नॉर्म्स चेंजेज की वजह से हमने क्वालिटी मेंटेन तो किया, बट हम कहीं ना कहीं वो सारे चीज़ें अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या हो गई हमारे साथ, क्योंकि हमने करीब करीब इतने सेंटर्स पे 200 से ऊपर एम्प्लॉय हायर किया था, वो एक साथ हमें हटाना पड़ा। तो एक तो अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या उनके लिए भी हो गया और उनके लिए भी हो गया जो गांव से हमने उठा करके ट्रेनर्स को लाए थे। The people we spoke to who run these centers have conveyed their problems to the government, and they showed us these letters that they claim are repeated attempts on their part to draw the ministry's attention to their pressing concerns. We tried to contact the ministry earlier this month, asking about the reasons for the centers shutting down, allegations of corruption in the assessment process, and the lack of support for those running the centers. The official we contacted did respond, saying that reallocation of targets is done to a center based on their performance after training. Those not performing well on this placement linkage of successful certified trainees are not getting future allocations. Further, Ministry has not received any significant complaint against the target allocation by NSDC through a RFP process under PMKVY. More of our questions are yet to be answered. Is this a convincing enough response? Well, we will leave it to the viewers to decide. I think the approach is skills are critical for jobs, so there is no doubt about that. But I think in the initial years of the Modi government, what really happened was they treated skill like some kind of a supply issue. That is, you create so many carpenters, so many plumbers, and then they get jobs. But skill is really a demand side issue. When you say demand side, what it means is, I may have the skill, but the job to use my skill has to exist. So till that happens, my skill will be useless. So you have to actually match the skill demand to skill supply. Supply should follow demand, not demand following supply. You can create any number of skills. You can say, I'll create so many beauty parlor creation. But if those jobs don't exist, then the skill is useless. On the other hand, there are centers that are fully functional. But the impression one walked away with was that on the implementation front, there is much that needs to be ironed out and addressed. The longer this will take, and the longer the lack of transparency on the data around employment, the government will continue to face a perception battle on its delivery on this front. In a country that has more than 50% of its population below the age of 25 years and more than 65% of its population below the age of 35, jobs and employment become a major concern. But come 2019 and the crucial general elections, jobs and the issue of unemployment have become a major controversy. While the government seems to be lacking and yet defending themselves, how much of it will be a deciding factor in your votes? You and I will come to know on the 23rd of May.